तो मैंने ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड करके रख दिया मैसेज, ठीक है ना। बेसिकली मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। संजीव सर ने हमें कहा, कहते हैं कि थोड़ा बहुत पाइथन का डेवलपर्स ढूंढ लो। तो इट्स वेरी इजी, वी वेंट टू लिंक्डइन, और वहाँ पे आई जस्ट पोस्टेड सेइंग वी आर हायरिंग, एंड आई गॉट अबाउट 76 लीड्स। तो अब क्या हुआ, वी नीडेड टू टैबुलेट दैट इन अ गूगल शीट, ठीक है। तो ये चीज मैंने पहले ही करके रखा है, तो मैंने इसका रिकॉर्डिंग करके रखा है। इट्स अ 3 मिनट रिकॉर्डिंग। आई जस्ट लाइक टू प्ले दिस रिकॉर्डिंग, इट इज मेंट फॉर दिस फोरम इटसेल्फ। आप एक बार सुन लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। And when you are sharing, share the sound also. Yes, absolutely. Boss asked me to look for some Python profiles on LinkedIn. What I did was I simply posted a job on LinkedIn, and LinkedIn sent me a ton of applicants. Along with that, what it also did was it sent me a bunch of emails, which were 76 to be precise. Now I needed to tabulate this in a Google Sheet. So my first step was I had to forward this to an email ID from where I could scrape the data. To forward all of this, I could not simply select all of this from the inbox and directly forward. Yahoo simply does not allow you to do that. So what I did was I used my nifty little tool called Mouse Recorder Premium. I recorded a simple macro which will basically go to my inbox first. Then it will click on the folder where I have put in all my emails which I have received from LinkedIn. It will sort with unread first, and it will apply this here. The ones that have not yet forwarded would pop up here. It would click on this particular mail, which is the first one, which is unread yet. Now it will click on this forward button. It will paste the email ID where I want to send this thing, and it will click on send. Now let's see how this thing happens in real time without me actually touching the mice. I'm simply going to click on play. Here I can decide how many times I want this thing to loop. I have 7 emails, so I will loop it 7 times here. I'll click on this play button. Now, right now I'm not touching my system, and it is basically going to do the whole thing by itself. Okay, there was some issue. I think there was a network lag, because of which it stopped. I'm going to try and run this one last time. I have done this for close to 50 emails already, and it has been working, hence I'm recording this video. So let's have a look. Yes, now it is working. Sometimes it glitches out for network issues or whatever it is, but this has really helped me so far, so I just thought I'd make a quick video for all of you. Okay, तो मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार हिंदी में भी, और ठीक है ना। ये बेसिकली जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाके ये वाला जो टूल है, ये टूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, आप माउस में, कीबोर्ड में जो भी आप टाइप कर रहे हैं ना, वो चीज को एक बार ये रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करके इसका एक मैक्रो, एक फाइल बन जाता है छोटा सा, ठीक है। उसके बाद आप, मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, आप रिकॉर्ड का बटन जैसे ही दबाएंगे, जो जहां पे आप क्लिक करेंगे, वो ये सारा चीज को ना रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पे देखिए ऐसे, इसको आप फिर स्टॉप कीजिए, और यू कैन से हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप दिस। इसको आप लूप कीजिए, तो इतने बार वो सेम काम वो करता रहेगा। सो एप्लीकेशन ऑफ दिस, ये आप आपका सिस्टम में समझ सकते हैं कि कहाँ आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है बेसिकली। जो काम हम रोबोट की तरह करते हैं, क्लिक किया फॉरवर्ड किया, क्लिक किया फॉरवर्ड किया, डिलीट किया, तो ये उसके लिए आई थिंक काफी अच्छा टूल है। तो आई थिंक इट्स क्वाइट एन अमेजिंग टूल गाइस। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, macrorecorder.com से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैक और विंडोज दोनों के लिए अवेलेबल है। जी सर, अवेलेबल फॉर बोथ मैक एज वेल एज फॉर विंडोज। जी सर। So over to you, sir. So this is system dependent. Iqlal, not on cloud. Okay? क्योंकि ये आपके सिस्टम में लोकली चलेगा ये इंस्टॉल होने के बाद।
ग्रेट. नाउ ओवर टू सुजीत. गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन अभिषेक से, कोई और क्वेश्चन? तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे को ऐसा काम करना पड़ता है, बार बार करना है, कौन करेगा इसको, तो एक बार रिकॉर्ड कर दीजिए एक्शंस को.